Okay, now again we have this matching type of questions. मैंने बोला था सेक्शन 3 में आएगा, ऑप्शंस ज्यादा होंगे और अब मुझे ये बताएं क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इसमें कोई इंफॉर्मेशन है और इनको वो एज इट इज बोलेंगे. बाय द वे क्वेश्चंस को रीवर्ड नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वन बाय वन बोलेंगे ताकि आपको पता चले कि अब 26 आ गया. अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से. व्हाट डिसीजन डू द स्टूडेंट्स मेक? इसका मतलब है ऑडियो में स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने कुछ डिसाइड करना है. व्हाट डिसीजंस डू द स्टूडेंट्स मेक अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ देयर प्रेजेंटेशन? अब इमेजिन करें दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंबाइंड प्रेजेंटेशन है, वो डिसाइड करने जा रहे हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स में उन्होंने क्या करना है. ठीक है, प्रेजेंटेशन के पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चंस में और जो डिसीजंस हैं वो दिए हुए ए बी सी डी ई में. अब जरा देखिएगा, जो डिसीजंस हैं इन लोगों ने डिसीजंस की रीवर्डिंग करनी है. कैसे करेंगे? ए आ गया यूज विजुअल्स. विजुअल की जगह पे ऑडियो वीडियो एड का वर्ड आ सकता है, विजुअल की जगह पे इलिस्ट्रेशन का वर्ड आ सकता है, पिक्चर का वर्ड आ सकता है, फुटेज का वर्ड आ सकता है, कोई भी चीज जो मल्टीमीडिया पे दिखाई जा सकती है उसको हम कहते हैं विजुअल. ठीक है, तो अब सिर्फ ये नहीं कि इंतजार करना है विजुअल का वर्ड आएगा तो आंसर होगा, और कुछ चीजें इसमें से ऐसी होंगी जो वो कहेंगे कि ये हमने नहीं करना. अब फर्ज करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हो रही है, एक बोलेगा आई थिंक वी शुड ऐड सम इमेजेस ऑफ दोज प्लेसेस टू एलैबोरेट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. दूसरा बोलेगा दैट्स एन ओल्ड फैशन्ड आइडिया, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड try to focus on the length of it, it's very long already, so let's keep it short और लेट्स कट इट बाय हाफ. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है, ये इस चीज को समझना है, आसानी से नहीं बताएंगे, ये नहीं है अच्छा जी ये है तो सीधी सीधी बात और आप कहीं ये आंसर हो गया. कीप इट शॉर्ट की जगह पे वो बोलेंगे कि लेंथी है, इसको शॉर्ट करना है. ऑप्शन सी, इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल, स्टूडेंट्स की जगह पे वर्ड आ सकता है ऑडियंस का, इन्वॉल्व की जगह पे आ सकता है इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, राइट, टेक ऑडियंस इनटू द डिस्कशन, और कोई भी ऐसी चीज जो ऑडियंस इंटरेक्शन की होगी दैट मींस इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स. ऑप्शन डी है चेक द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट. अब इसके लिए वो बोल सकते हैं वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट. ठीक है, करेक्ट का वर्ड आ गया एक्यूरेट के लिए. प्रोवाइड अ हैंड आउट. वेरी सिंपल, हैंड आउट की जगह पे वो कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं, कोई बुकलेट का वर्ड लगा देंगे या बोलेंगे आई थिंक वी शुड गिव देम अ हैंड आउट और वी शुड गिव देम अ बुकलेट और वी शुड गिव देम अ मैनुअल, एनीथिंग लाइक दैट. हैंड आउट उसी को कहते हैं ना जिससे आपको भी मिले, ये हैंड आउट ही है, राइट. अच्छा जी, फोकस ऑन वन एग्जाम्पल. सो वन एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम्पल का वर्ड यहां पे लगाया, वहां पे वो फर्ज करें अगर वो कहते हैं आई थिंक वी शुड टेक एलिफेंट एज एन इंस्टेंट एंड वी शुड जस्ट फोकस ऑन एलिफेंट अदर देन अदर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. अगर तो ये कहेंगे क्या है क्वेश्चन, फोकस ऑन वन एग्जाम्पल. अब वन एग्जाम्पल की जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया एलिफेंट का, तो आपने देखना है कि एग्जाम्पल किस चीज की है. एंड लास्ट, डू ऑनलाइन रिसर्च. ऑनलाइन रिसर्च के लिए वर्ड आएगा चेक ऑन द वेबसाइट, चेक ऑन द इंटरनेट, राइट, जस्ट मेक श्योर दैट यू सी इट ऑन द वेब एंड एनीथिंग लाइक दैट. अच्छा, अब वही काम होगा, लेफ्ट हैंड आपका यानी लेफ्ट हैंड की फिंगर इसको करें क्वेश्चन पे, राइट हैंड जिससे आप लिखते हैं पेंसिल वाला हैंड उसको आप करें ऑप्शंस पे. अब जो ही ये ऑडियो चलेगी और ये मुमकिन है कि 2-3 ऑप्शंस को वो डिस्कस करें, राइट. क्वेश्चन क्या है, दे डिसाइड. अब उनका जो डिसीजन है, और याद रखिएगा डिसीजन में ना आमतौर पे पहले आती है सजेशन. सजेशन आंसर नहीं होता. अगर मैं कुछ सजेस्ट करता हूं, हमने कोई डिसाइड करना है, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं जी हम लोग क्लास का टाइम जो है ना रात को 9 बजे कर देते हैं, ये सजेशन है. डिसीजन क्या होगा, आप लोग कहते हैं ठीक है सर दैट्स फाइन, फिर मैं कहता हूं अच्छा जी अब डिसाइड हो गया कि हमारी क्लास का टाइम 9 बजे है. तो सजेशन में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका अग्रीमेंट में. अग्रीमेंट का मतलब है कि उन्होंने अग्री किया, वो डिसीजन बन गया फिर, राइट. लेट्स स्टार्ट. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 26. So, I think we've probably got enough for our presentation. It's only 15 minutes. Okay, so I suppose we'll begin with some general historical background about why coastal cities were established. But we don't want to spend too long on that. The other students will already know a bit about it. It's all to do with communications and so on. Yes. B. We don't want to spend too long on that. Too long on that means keep it short.
राइट. कीप इट शॉर्ट की जगह पे वर्डिंग क्या आ गया? वी डोंट वांट टू स्पेंड टू लॉन्ग ऑन दैट, मींस वी वांट टू कीप इट शॉर्ट, राइट. अच्छा जी, अब ये आइट्स की लैंग्वेज ऐसी है, ये आपको समझना पड़ेगी. कल मैं एक ऑनलाइन क्लास में रीडिंग करवा रहा था परसों, उसमें था लिटिल की जगह पे वर्ड दिया हुआ था नॉट मच. लिटिल और उसका यानी क्वेश्चन में था लिटिल और पैसेज में दिया हुआ था नॉट मच. सो ये लिटिल, नॉट मच, इसी तरह से कीप इट शॉर्ट, वी डोंट वांट टू मेक इट लॉन्ग. ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा, और ये पता है कैसे आएगी? ये प्रैक्टिस करके आएगी, ये रट्टा लगाने से नहीं आएगी कि आप कहें जी मैं आपको एक लिस्ट दे दूं, आप उसको याद कर लें. उस वक्त दिमाग तभी चलेगा जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ऑल दैट. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27, जियोग्राफिकल फैक्टर्स. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked. On a handout, you mean? Or some slides everyone can see? Yeah, that'd be better. Okay, now listen, handout was a trap. And then he said some, what was the last thing? Maps. Slide. Slides people can see. So slide and map, that means it is use visuals. Handout was actually just a trap. I'll play it again. Just see. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked. On a handout, you mean? Or some slides everyone can see? Yeah, that'd be better. That would be better. So slides बाद में बात हुई. That would be better का मतलब है कि slides would be better, और slides क्या हो गया? Use visuals. ठीक हो गया ना? Good. क्वेश्चन नंबर 28 पे आइएगा. पास्ट मिस्टेक्स. अब उनकी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है पास्ट मिस्टेक्स. देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं. It'd be good to go into past mistakes in a bit more detail. Did you read that case study of the problems there were in New Orleans with flooding a few years ago? Yes, we could use that as the basis for that part of the talk. I don't think the other students will have read it, but they'll remember hearing about the flooding at the time. Okay. So that's probably enough background. So, New Orleans की एग्जाम्पल दे रहे हैं. What is that? Option F. Focus on one example. दोबारा सुनिएगा. Why focus? आप लोगों ने क्या चूज किया? F ही किया. C किया किसी ने? Involve other students? नहीं. Okay, I'll play it again. Past mistakes. It'd be good to go into past mistakes in a bit more detail. Did you read that case study of the problems there were in New Orleans with flooding a few years ago? Yes, we could use that as the basis for that part of the talk. We can use that as the basis for that part of the talk. So case study is example. Case study of New Orleans in America, right? So case study of New Orleans, that is actually focus on one example, right? Next is future risks, 29. So then we'll go on to talk about what action's been taken to deal with the problems of coastal cities. Okay. What else do we need to talk about? Maybe something on future risks, looking more at the long term if populations continue to grow? Yeah, we'll need to do a bit of work there. I haven't got much information, have you? No, we'll need to look at some websites. Shouldn't take too long. Okay. We'll need to look at some websites. Good. See, खुशी होती है ना जब समझ आ रही हो, पता चल रहा क्या हो रहा है, और जब एकदम ऑडियो खत्म हो जाए और अभी आप इंतजार करें और भी बोल, so फिर टेंशन शुरू हो जाती है. वेरी गुड. सो द आंसर इज जी. डू ऑनलाइन रिसर्च. लुक एट द वेबसाइट एंड डू ऑनलाइन रिसर्च. लास्ट है जी आपका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस. देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं. And I think we should end by talking about international implications. Maybe we could ask people in the audience. We've got people from quite a lot of different places. That'd be interesting if we have time, yes. So now, should we go? C. Involve other students. क्या बोला? Ask the audience. Right? That would be interesting and all that. चलें जी. That's good.